गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ट्रीटी ऑन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन की जनरल असेंबली की एक लीगल कमेटी है, उन्होंने लैंडमार्क रेजोल्यूशन अप्रूव किया है ताकि पहली एवर ट्रीटी जो है वो बनाई जा सके क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। तो अगर हम देखें अभी तक हम कन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट कौन कौन से लॉज इंटरनेशनल लॉज बना चुके हैं, तो जिनीवा कन्वेंशंस हैं जो कि 4 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शंस देने के लिए, खासकर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स में। ठीक है, जो कि वुंडेड सोल्जर्स, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और सिविलियंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। फिर 2 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं जिनीवा कन्वेंशंस के, जो कि सिविल वॉर्स और नॉन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को भी कवर करते हैं। फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कहते हैं, और ये उनको प्रोटेक्ट करता है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हॉस्टिलिटीज़ में, जैसे कि सिविलियंस, मेडिकल पर्सोनल या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। फिर हैं हेग कन्वेंशंस जो कि लॉज ऑफ वॉर और वॉर क्राइम्स को एड्रेस करते हैं। फिर आपका आईसीसी भी है जो कि वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड में इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है ना। फिर आपका सबसे जो मेन है वो तो आपका यूनाइटेड नेशंस चार्टर है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में फोर्स को गवर्न करता है। तो एक सेपरेट ट्रीटी की ज़रूरत ही क्यों है, पहले तो हम ये समझें। अगर तो अभी तक कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जो स्पेसिफिकली क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को टारगेट करे। आईसीसी प्रोसिक्यूट तो कर सकता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन जो है सिर्फ 70 कंट्रीज़ में ही एप्लीकेबल है। जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, जैसे कि मर्डर, रेप, सेक्सुअल स्लेवरी, एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, टॉर्चर, डिपोर्टेशन, ये जो है एज पार्ट ऑफ वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन सिविलियन में आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो एक ऐसी ट्रीटी की ज़रूरत है जो कि सेफ हेवन फॉर परपेट्रेटर्स को एलिमिनेट करे। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये मैक्सिको और गाम्बिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन है, और ये आउटलाइन कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके अंदर ये ट्रीटी के नेगोशिएशंस हों। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एनहेंसिंग डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, और रिसेंट एक नीति आयोग की रिपोर्ट है कोकिंग कोल पर कि कैसे हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ख़त्म करके या फिर कम करके उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो कोकिंग कोल क्या होता है? ये मेटलर्जिकल कोल होता है जो नेचुरली अकरिंग सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है विद इन अर्थ्स क्रस्ट। टाइप ऑफ ये बिटुमिनस कोल होता है, इसमें ज़्यादा कार्बन होता है, लेस ऐश होता है और लेस मॉइस्चर होता है एज़ कम्पेयर टू थर्मल कोल। तो ये एक वाइटल रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है इसको स्टील प्रोडक्शन में। ठीक है, तो आयरन ओर का ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है फर्नेस चार्ज को। ठीक है, चाइना जो है वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के पास रिजर्व्स तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, लगभग 85% हम इंपोर्ट ही करते हैं इसका। तो चैलेंजेस क्या हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो अपनी बहुत ही कम कैपेसिटी पर ऑपरेट करती हैं, उनकी वॉशरीज़ बहुत कम है। प्राइवेट वॉशरीज़ लगभग 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करती हैं। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस क्या दी जा रही हैं नीति आयोग की रिपोर्ट द्वारा, कि इंडिया जो है वो कोकिंग कोल को एक क्रिटिकल मिनरल रिकॉग्नाइज करे, जिससे क्या होगा कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस से हम अपनी पॉलिसीज़ को अलाइन कर पाएंगे और पॉलिसी सपोर्ट दे पाएंगे ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम एनहेंस कर सके। इंडिया के पास लगभग 5.13 बिलियन टन्स ऑफ प्राइम कुकिंग कोल है, 16.5 बिलियन टन्स ऑफ मीडियम क्वालिटी रिजर्व्स हैं, इनको फुली यूटिलाइज करो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो जॉइंट वेंचर्स भी इनेबल करे ताकि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल किया जा सके फ्रॉम वॉशरीज। ठीक है, ताकि स्टील प्लांट्स जो है वो बेनिफिट हो सके लोअर कुकिंग कोल एक्सपेंसेस से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 29th एडिशन जो यूएनएफसीसी की चल रही है बाकू अजरबैजान में, वो कंक्लूड हुई है रिसेंटली 22 नवंबर को, लेकिन नेगोशिएशंस अभी भी कुछ अनरिजॉल्व की इश्यूज पर चल रहे हैं। ओके, तो पहला तो सबसे बड़ा जो की इशू है वो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जिसके अंदर कहा जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा कि हमें 2025 से 35 के बीच में हर साल $1 ट्रिलियन की मदद दी जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा। करंट कॉन्ट्रीब्यूशंस तो सिर्फ 115 बिलियन है, वो भी जो है वो लोन्स और बाकी फॉर्मेट में है, ग्रांट्स नहीं है वो। तो NCGQG के अंदर जो है वो पैसा मांगा जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा डेवलप्ड कंट्रीज़ से, कि कहा जा रहा है कि जो 100 बिलियन का टारगेट था वो तो आपसे पूरा हुआ नहीं, तो आपको अब हमें 1 ट्रिलियन हर
साल देने पड़ेंगे अगले 10 साल तक। साइंटिफिक असेसमेंट्स जो हैं वो भी ये इंडिकेट कर रही हैं कि 0.8% इंक्रीज़ हुआ है एमिशंस में फॉर 2023। ठीक है। डेवलपिंग नेशंस इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया और ग्रुप ऑफ 77 डेवलप्ड कंट्रीज़ को कह रही हैं कि आप हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हो हायर एमिशंस के लिए, इसलिए बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस आपको ही देना है। और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे वो किस प्रपोर्शन में होंगे कि आपने हिस्टोरिकली कितनी एमिशन की है और आपका पर कैपिटा जीबीडीपी कितना है। ओके। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं ईयू द्वारा जो लेड हैं वो कह रही हैं कि हम 1.3 ट्रिलियन टारगेट अगर एनुअली देंगे तो वो 2035 तक जो है वो उसमें वो कम करने को कह रहे हैं उसे। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे सोर्सेज से अगर हम देंगे तो बहुत सारे सोर्सेज, सिर्फ पब्लिक सोर्सेज से नहीं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही हैं कि ग्रांट बेस्ड मॉडल होना चाहिए, मतलब उसमें लोन्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो उस चीज़ को भी डिसएग्री कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। तो मेजर डेवलपमेंट्स अगर हम देखें तो अभी तक जो हमको COP29 में देखने को मिली है, तो एक यूएन कार्बन मार्केट बनाई गई है अंडर पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6। इंडिया जो है वो इस मार्केट को, अपनी मार्केट को इस के साथ जो है वो एक्टिवेट करना चाहता है। ठीक है, लेकिन कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं ईयू का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, खासकर चाइना जैसी कंट्रीज़ द्वारा। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पब्लिश किए हैं 4 सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स अंडर इंडिया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023। इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी रूल्स भी जो हैं वो बताए गए हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आपको पता है कि पहले के जो 3 एक्ट थे उन सबको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया गया है। अब जो रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट या ऑथराइज्ड एजेंसीज जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं टेलीकॉम कंपनीज़ को ट्रैफिक डेटा के लिए या फिर बाकी का डेटा जो साइबर सिक्योरिटी पर्पसेस से हमें चाहिए होता है, जैसे कि मैसेज डेटा। ठीक है, ट्रैफिक डेटा। टेलीकॉम कंपनीज़ को अपना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि वो ट्रैफिक डेटा जो है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट जब भी मांगे तो उसको दे। ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज़ को अडॉप्ट करनी पड़ेगी और रिपोर्ट करनी पड़ेगी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके। कंपनीज़ अपनी पीरियोडिक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स भी करेंगी और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी बनाना पड़ेगा टेलीकॉम कंपनीज़ को। ठीक है, इनिशियल रिपोर्टिंग जो है वो विदिन 6 आवर्स होंगी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो। डिटेल्ड रिपोर्ट्स 24 घंटे के अंदर अंदर देनी पड़ेंगी, खासकर तो वो भी कि क्या एक्शन लिया गया। कंपनीज़ को साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस रिपोर्ट्स एक गवर्नमेंट के पोर्टल पर सबमिट करनी होंगी। तो कंपनीज़ को एक चीफ टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा ताकि कोऑर्डिनेट कर सके अगर कोई इंसिडेंट होता है या उस पर कंप्लायंस जो है। ठीक है, टेलीकॉम इक्विपमेंट जिसका IMEI नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए गवर्नमेंट से ताकि गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उसे ब्लॉक कर सके। गवर्नमेंट पोर्टल बनाई जाएगी सारे रूल्स को डिजिटली इंप्लीमेंट करने के लिए और गवर्नमेंट एक्शन ले सकेगी थ्रेट एक्टर्स पर डिस्कनेक्ट करके उन आइडेंटिफायर्स को। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेव्स OTT प्लेटफॉर्म। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने OTT स्पेस में एंटर किया है वेव्स नाम से। तो वेव्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा प्रसार भारती का, जिसमें कि इंडिया की जो डिमांड बढ़ रही है स्ट्रीमिंग सर्विसेज को उसको केटर किया जाएगा। वाइड रेंज ऑफ कंटेंट अवेलेबल होगा इसमें, ऑन डिमांड कंटेंट, लाइव इवेंट्स, गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग ऑप्शंस। इस ऐप के अंदर लगभग 65 लाइव चैनल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंक्लूडिंग प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स। तो कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस जो कि कंटेंट ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू डिलीवर करती है उसको हम OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं RS-26 रुबेज। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रशियन ICBM जिसने रिसेंटली यूक्रेन की नाइप्रो सिटी को टारगेट किया था उसका नाम है RS-26 रुबेज। ये एक इंटरनेट कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था 2012 में। ये लगभग 12 मीटर लंबा है, 36 टन का है और 800 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकता है। 2000 से 6000 किलोमीटर की इसकी बीच में रेंज है और ये मीर्व्ड केपेबल है, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंड री एंट्री व्हीकल्स हैं इसमें, मतलब एक ही मिसाइल से कई जगह पर टारगेट किया जा सकता है। ओके। तो ICBM एक गाइडेड मिसाइल है होते हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को भी डिलीवर करते हैं और इसको अदर पेलोड्स भी इससे डिलीवर किए जा सकते हैं। इंडिया का सबसे फेमस ICBM है अग्नि 5 जिसकी लगभग 5000 किलोमीटर की रेंज है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला बनाया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो कि ग्वालियर में बनाया गया है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है? मिक्सचर होती है ये हाइड्रोकार्बन गैसेस और वेपर्स का, जिसमें मेनली मीथेन होती है गैसियस फॉर्म में। तो इसको जो है
प्रोड्यूस किया जाता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, प्योरीफाइड एंड कंप्रेस्ड की जाती है जिससे एज ऑटोमोटिव फ्यूल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी। तो ये जो है सीएनजी को रिप्लेस कर सकता है ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज़ में। कन्वर्जन जो होती है एग्रीकल्चर रेजिड्यू की, कैटल डंग की या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, उसको सीबीजी में किया जा सकता है कमर्शियल स्केल पर भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेफिथ्रोमाइसिन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए, ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। यूनियन मिनिस्टर ने फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को जो है वो लॉन्च किया है, जो कि कई तरह की रेजिस्टेंट या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकती है। तो इसमें 14 साल लगे इसे बनाने में। एक ऐसी एंटीबायोटिक है ये जो डेवलप की है बिराक ने, और इसका ट्रेड नेम होगा बिकनाफ। कंट्री की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है और जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए बनाई गई है। तो खासकर जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसको जो है ट्रीट करने में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये टिपिकल और एटिपिकल दोनों तरह के पैथोजेंस को ये टारगेट करेगी। मिनिमल इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शंस नहीं है, और ये अनअफेक्टेड रहती है बाय फूड ऑल्सो। ठीक है, 10 टाइम्स एफिकेसी ये ऑफर करती है विद जस्ट 3 डोजेस। ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंट इन कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंट निमोनिया। 14 साल की रिसर्च लगी है। ठीक है, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया क्या होता है? मोस्ट कॉमन ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है और मॉर्बिडिटी है वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो है कंज्यूमर अफेयर्स के, वो दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर विजिट किया उन्होंने, दाम्बुक विलेज अरुणाचल प्रदेश में। तो ये एक फ्लड कंट्रोल कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि 2880 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें देगा। कंट्री का बिगेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी है। तो इसको एनएचपीसी बना रहा है। ठीक है, और ये एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। इसके लिए 43 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वायर भी बनाया जा रहा है जिसकी ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 3.85 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अष्टमुडी लेक। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिश किल देखने को मिली है अष्टमुडी लेक में, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हो रहे हैं, जो कि सीवेज कंटेमिनेशन हो गया, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया, एनक्रोचमेंट्स, अनकंट्रोल्ड वीड ग्रोथ, जो कि वाइटल इकोसिस्टम जो है लेक का उसको थ्रेटन कर रहे हैं। ओके, तो अष्टामुडी लेक जो है एक रामसर वेटलैंड है जो कि कोलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है। इसका नाम जो है वो 8 आर्म्स या चैनल्स पर पड़ा है, इसलिए इसका नाम अष्टमुडी है। कालादा रिवर जो है वो इसका मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Treaty on Crimes Against Humanity. This topic is important for your international relations. So UN General Assembly's Legal Committee has approved a landmark resolution to initiate negotiations for the first ever treaty to prevent and punish crimes against humanity. So what are the various laws or international laws which already exist to govern the conflict? First of all is the Geneva Conventions of 1949, which are a set of 4 international treaties which established humanitarian protections during armed conflicts. Then they safeguard the wounded soldiers, prisoners of war, and even civilians. Okay, so then there are 2 additional protocols to the Geneva Conventions which were signed in 1977. They expand protections to cover civil wars and also non-international conflicts. Then we have this international humanitarian law called the Law of Armed Conflict, which protects those who are not actively participating in hostilities, like the civilians, medical personnel, and prisoners of war. Okay, then we have the Hague Conventions also, which address the laws of war and war crimes, and they focus on the conduct of hostilities, treatment of prisoners, and protections of civilian and cultural property. Uh, there is International Criminal Court statute also, which which is also called the Rome Statute. We already discussed in the last video. Okay, this ICC prosecutes individuals for crimes like the war crimes, crimes against humanity, and genocide. The most important one is the United Nations Charter, which governs the use of force in international relations. Then why are we talking about crimes against humanity as a separate treaty?
because currently there is no comprehensive international treaty which specifically targets the crimes against humanity. Crimes against humanity can include murder, rape, sexual slavery, enforced disappearances, torture, deportation. We have this ICC which can prosecute crimes against humanity, but it lacks jurisdiction because um, it is only having jurisdiction in about 70 countries, and it lacks jurisdiction in about 70 countries, including the major countries like US, China, Russia, and India. Okay, so the rise of conflicts and state sponsored atrocities in regions like Ethiopia, Myanmar, Gaza, Ukraine, and Sudan is highlighting the urgent need for a binding international instrument to combat impunity and protect civilians. So, by criminalizing such acts globally, this treaty would eliminate safe havens for the perpetrators. Okay, so this initiative is led by Mexico and Gambia, and this resolution is also outlining a structured timeline so as to negotiate this treaty. Okay. So the next topic is enhancing domestic coking coal production in India. This topic is important for your economy section. So a recent Niti Aayog report on the import of coking coal has outlined the measures to reduce import dependency and strengthen domestic production. Okay. So what is coking coal? It is also known as metallurgical coal. It is a naturally occurring sedimentary rock which is found within the earth's crust. It is a type of bituminous coal, and it typically contains more carbon, less ash, and less moisture than thermal coal. It is a vital raw material for steel production as well. Coke or metallurgical coal can be it is created through the high temperature carbonization of coking coal, and coke is used in blast furnaces to produce pig iron. It serves as both a reducing agent for the iron ore and for structural support for the furnace charge as well. China is one of the largest producers of the coking coal in the world. Despite vast reserves, India still relies on imports, and this import stands at about 85% as of now. Okay, what is the reason why we are not able to enhance domestic production of coking coal? So the public sector undertakings washeries operate at less than 32% capacity. Okay, which even with washed coal yields of about just 35 to 36%. In contrast, private washeries achieve over 75% capacity utilization. Okay, so that's why Niti Aayog report is saying that recognize the king coal as a critical mineral, which will align India with global best practices, and designating it as critical will justify policy support for for boosting domestic production. India holds about 5.13 billion tons of prime coking coal and 16.5 billion tons of medium quality reserves, and these resources should be fully utilized. Okay. So Ministry of Coal must enable joint ventures to sell byproducts from washeries so as to benefit the steel plants with lower coking coal expenses. Okay. So the next topic is bridging the gap between developed and developing nations. This topic is important for your environment section. So the 29th edition of the UN Climate Conference in Baku, Azerbaijan, was anticipated to be concluded on November 22, but negotiations have been extended due to unresolved key issues. So developing countries have demanded at least $1 trillion annually from 2025 to 2035 to meet emission targets, known as the new collective quantified goal. Current contributions stand at about $115 billion 2021-2022 period, and even that is not fully grants. It is part a majority of it is loans from the developed countries. So this NCGQ is refers to the money that will be given to developing countries by developed countries so as to help the developing countries to meet their goals to transition away from the fossil fuels and uh, curb the greenhouse gas emissions. So developed countries were expected to agree on a higher target above $100 billion as per the Paris Agreement. We are also having scientific assessments which indicate an expected 0.8% increase in emissions for 2023. Okay, so developing nations, including China, India, and the G77, they emphasize that developed countries, being historically responsible for higher emissions, should bear the bulk of climate finance. Contributions should be proportional to historical emissions and per capita GDP. Okay, so what is the position of developed countries? So they are saying that uh, they are proposing a lower target of 1.3 trillion annually by 2035, and they want contributions from various sources and not just public. They are also disagreeing over the
proportion of grants and loans when where the developed nations are resisting the demands for a predominantly grant-based model. So, have been the major developments at COP29? So, a supervised UN carbon market was established based upon the Article 6 of the Paris Agreement, and India is planning to leverage this agreement to activate its own carbon trading market as well. Okay, so China, which is part of the basic group, is raising concerns over the EU's carbon border adjustment mechanism, which is being called as a tax on non compliant imports, which will be implemented in 2026. So the next topic is telecommunications cybersecurity rules. This topic is important for your governance section. So Department of Telecommunications has published four set of draft rules under the Indian Telecommunications Act of 2023. One of these includes cybersecurity rules, and these rules mandate specific measures for telecom entities and outline clear obligations to enhance cybersecurity. Okay, so the Telecommunications Act, we all know, was brought in to consolidate three separate acts of Indian Telegraph Act, Indian Wireless Telegraphy Act, Telegraph Wires Unlawful Protection Act, and government has recently released the rules for the same. So the cybersecurity rules include that the government or authorized agencies can request telecom companies for traffic data or other data for cybersecurity purposes. Message data is excluded from the scope of government requests, whereas the traffic data, which is the information generated, transmitted, received, or stored in the telecommunication networks, such as type, routing, duration, and timing, will be collected, and telecom companies must establish infrastructure to collect traffic data and provide it to the government. Okay, so telecom companies must also adopt and report on a cybersecurity policy, which includes security safeguards, procedures for network testing and incident response systems, forensic analysis measures. Okay, companies must also conduct periodic cybersecurity audits as well. They also must establish the security operations centers to monitor and handle cybersecurity incidents. So, incident reporting would include initial reporting of cybersecurity incidents within 6 hours of awareness, detailed reports within 24 hours, and companies must furnish cybersecurity compliance reports on a government portal through secure communication channels. Okay. Companies must also appoint a chief telecommunication security officer to coordinate incident response and compliance. Okay. Telecom companies with an IMEI number must be registered with the government, and the government may block equipment with tampered IMEI numbers or direct manufacturers to assist in addressing such issues. A government portal will facilitate the digital implementation of these rules, and the government can also take action against threat actors by disconnecting identifiers. So the next topic is Waves OTT platform. This topic is important for your economy section. So the public broadcaster Prasar Bharati has stepped into the OTT space with the launch of its new app Waves. Waves is a digital platform developed by Prasar Bharati, and it aims to cater to India's growing demand for streaming services, as stated by the broadcaster in its release. It will offer a wide range of content, including on demand content, live events, games, online shopping options. Currently, the app provides access to around 65 live channels, including private broadcasters. And what is OTT? OTT refers to any streaming service which delivers content through wireless internet. So the next topic is RS-26 Rubays. This topic is important for your security section. So a Russian intercontinental ballistic missile, which was fired at the city of Dnipro, was RS-26 Rubays. It is an intercontinental ballistic missile which was first successfully tested in 2012. It is estimated to be about 12 meters long, and it can carry an 800 kg of nuclear warhead. Its estimated range is between 2000 and 6000 kilometers. It is capable of carrying multiple independently targetable re-entry vehicles. Okay, what is ICBM? It's a guided missile that is designed to deliver nuclear warheads, although it could also deliver other payloads. According to the Federation of American Scientists, ICBMs have a minimum range of about 5500 kilometers, and Agni 5 is an Indian ICBM with a range of over 5000 kilometers. So the next topic is compressed biogas. This topic is important for your environment section. So India's first modern self-sufficient Gaushala with state-of-the-art compressed biogas plant was launched in Gwalior, Madhya Pradesh. What is compressed biogas? It is the mixture of hydrocarbon gases and vapors consisting mainly of methane in gaseous form
It has been produced by the decomposition of animal and plant waste, purified and compressed for use as an automotive fuel and industrial application. It can replace CNG in automotive, industrial and commercial areas as well. Okay, conversion of agriculture residue, cattle dung and municipal solid waste into CBG will be a on a commercial scale will have several benefits for us. Okay, so the next topic is nephromycin. This topic is very important for your for your science and tech section. So in a groundbreaking step for India's biotechnology sector, Union Minister has formally launched the first indigenous antibiotic called the nephromycin for resistant infections. It is an antibiotic which has been developed with the support of BIRAC. It has been brought to market under the trade name called McNAF, and it is country's first indigenously developed antibiotic which is aimed to tackle antimicrobial resistance. This innovation is designed to treat community acquired bacterial pneumonia. It targets both typical and atypical pathogens. This antibiotic will have minimal gastrointestinal side effects, no significant drug interactions, and remains unaffected by food. Okay, and it will offer 10 times efficacy with just 3 doses, and this has been done with an investment of about 500 crores and 14 years of dedicated research. Okay, it is one of the what is community acquired bacterial pneumonia? It is one of the most common infectious diseases, which is an important cause of mortality and morbidity worldwide. So the next topic is Dibang multi-purpose hydropower project. This topic is important for your environment section. So Union Minister of State for Consumer Affairs has recently visited the Dibang multi-purpose hydropower project site at Arunachal Pradesh Dambuk village. And what is Dibang multi-purpose hydropower project? It is a flood control cum hydroelectric power project planned to be developed on the Dibang river. So it has 2880 megawatt installed capacity, and it will be the country's biggest hydropower facility. It is being developed by India's state-run National Hydroelectric Power Corporation, and it is designed as an energy storage project. This dam will create a 43-kilometer reservoir with a gross storage capacity of 3.85 billion cubic meters. Okay. So the next topic is Ashtamudi Lake. This topic is important for your environment section. So a recent episode of fish kill in Ashtamudi Lake has once again brought to the fore the life-threatening issues of sewage contamination, plastic pollution, encroachments, and uncontrolled weed growth in the lake ecosystem. Ashtamudi Lake is a Ramsar wetland located in Kolam district of Kerala. Because of its 8 arms or channels, this lake is named as the Ashtamudi. Okay, and Kalada River, which is the major source of water for Kalada River is the major source of water for Ashtamudi Lake. Historical records also suggest that Moroccan explorer Ibn Battuta highlights the Quilon city, which is on the banks of Ashtamudi Lake, as one of the major trading centers in the ancient period. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.